Good evening, sir. Good evening. Okay, so good evening, guys. In the previous class, we have gone through the introductory part of our phase diagram. In today's class, we are going ahead in the phase diagram. Okay, so now up to this lecture, we all are familiar with the term phase diagram, which is also known as equilibrium diagram. Okay, so one picture again I have kept on the right side of this particular slide. This particular phase diagram is a phase diagram of copper and nickel. Okay, this particular phase diagram is related to the copper and nickel phase diagram. Means at one axis, at one end, copper will 100%. Likewise, this at this particular position, copper will be 100%, and at the another end, nickel will be the 100%. Okay, 100% nickel will be there. Okay, if we are moving from this left to right direction, so the amount of copper will reduce. Okay, so as much as the amount of copper is reducing, means for example, if at this particular point here 80% copper is there, okay, and rest 20% nickel will be there. Okay, so on this axis we can understand that what is the composition of each element, that is copper and nickel. Okay, on y-axis there is a temperature, and if you draw a particular line, sorry, if you draw a particular line, vertical line, okay, at a particular composition, so at that particular composition you can understand that according to the temperature what could be the different phase within the copper nickel phase diagram. Okay, so such type of different phase information, composition information, temperature information we can have with the help of phase diagram. Okay, so now I'm coming towards the next slide. So next slide tells you about the significance or the use of equilibrium or phase diagram. Okay, means what kind of information we can extract, we can get from the equilibrium diagram. Okay, one thing always be remember that equilibrium diagram or phase diagram are same thing. Okay, don't be confused. Okay, equilibrium diagram or phase diagram are the same thing. We can extract the similar information from both the diagrams. Okay, so here in this slide, we must know that what kind of information we can extract from this equilibrium diagram. Okay, so with the help of this equilibrium diagram, we can have the information about the phases present. Okay, based on different composition and temperature. Okay, if your temperature and composition are a variable, then
The prediction of phase or the information of the phase, available phase, we can have with the help of phase diagram or the equilibrium diagram. With the help of this particular phase diagram, we can have the indication of solid solubility, because when we have a composition at this particular point where I have told you that copper is 80% and nickel is 20%. So definitely nickel is going to mix, nickel is going to soluble within copper. Okay, so what kind of solid solubility will be there? So that kind of information about the solid solubility we can also have with the help of phase diagram. Okay, it also shows the temperature range over which solidification or liquidification of material system occurs. From this particular phase diagram, it is easy to quote that in case of pure copper, liquid phase you can get beyond 1085 degrees centigrade, but in the case of pure nickel, you will have a liquid phase beyond 1455 degrees centigrade. But as you are mixing your nickel in copper, your liquid phase or liquidus line temperature is increasing. Okay, so this kind of information of liquidus line or the solidus line or the availability or occurrence existence of the available phases based on the temperature you can extract from the phase diagram. Okay, and with the help of this phase diagram we can also have an information regarding the temperature, that at what temperature which phase will start and which phase will end. Okay, so that सर kind of, डायग्राम एक बार फिर से बता देंगे सर? okay, so लास्ट में डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा सा आगे तक कवर कर दूं इसको. ओके ओके सर, ओके सर. So now it is well clear that what kind of information we can extract from this copper nickel diagram or any kind of phase diagram. Okay, so with the help of phase diagram we can have the phase information based on composition and temperature. We can have solid solubility information. Okay, we can have the range of temperature related to our solidification or liquidification of the material. Okay, we can have the information about the temperature, okay, related to the different phase start to melt. Okay, so these type of information we can extract from our phase diagram. So some common terms are there in the phase diagram, which is termed as basic terminology. So first thing is known as the system, another thing phase, variable, component, and alloy. Okay, so first of all, what is system? System is kind of isolated body or a material. Okay, the substance that isolated and unaffected by their surroundings are known as system. The substance that isolated and unaffected by their surrounding are known as system. It may be a composition of solid. Please note it. It may be a composition of solid, liquid, gases, or the combination. Okay, or the combination, and may have metals and non-metals separately or in combination. So if you have such kind of the things like solid, liquid, or gas, or in combination with solid, liquid, or gas, okay, yeah, you can say that metal or non-metal separately or in combination, that could be termed as a system. Phases, you are well familiar with the term phase. Okay, means physical and chemical composition. Physical and chemical composition phases means physical and chemical composition of a substance. And you know what is the substance? Substance is a system. Okay, separated from the other portion by a surface and an interface. That portion have different composition and properties. Okay, so as in the previous case, if we look on the previous slide, so here you can say this is a complete liquid phase. This particular domain is a kind of mixture of two phase where liquid and alpha solid is there. Okay, and below this particular curve
complete alpha phase is there, which is a kind of solid phase. Okay, so here the phase, it is a physical and chemical composition. It is a physical and chemical composition of a substance or a system separated from the other portion by a surface and an interface. Okay, so here the liquidous line or the solidus line will make it separate from the other phase. Each portion have different composition and properties. So it is well clear that each, if solid phase is there, so different properties, different composition will be there. If liquid plus solid is there, so definitely different properties we will get. Okay, so here in equilibrium diagram, liquid is one phase, solid solution is kind of another phase. Okay, now the third important point is variables. Okay, in case of equilibrium diagram or phase diagram, three variables are there. First one is pressure, second one is temperature, and the third one is composition. Okay, so these three things are there, and these all three terms are known as variable in case of phase diagram. Next one is the component. Okay, so our element, our chemical compound, our substances whose presence is necessary and sufficient to make a system are known as component. Okay, in case of this copper and nickel phase diagram, copper is highly required, nickel is highly required. So component of this copper nickel phase diagram will be termed as 2. In case of pure metal, there will be a single component. So the component in a pure metal will always be considered as 1. Whereas in case of binary, for example, copper and nickel, there will be 2 components. Alloy, you are well familiar with the term alloy. It is a mixture of 2 or more elements having metallic properties. In the mixture, metal is in the large proportional and the other can be metal and non-metal. Okay, so we are very much familiar with the term alloy as well as the term composite, because alloy और composite में कुछ features तो similar हैं, but some features are totally different, even though the definition of alloy and composite are also distinct with each other. So in case of alloy, somehow fusion is there with 2 or more than 2 elements. Okay, so now here it is necessary to introduce the Gibbs phase rule. Gibbs established a relationship between the number of variables, okay, between the number of variables, और number of variables को यहाँ पर F से denote किया गया है. Number of elements, element भी कह सकते हैं और number of components भी कह सकते हैं आप, और number of phases P. Okay, so they have explained or they have established one formula, that is P plus F is equal to C plus 2. What is 2? The 2 is for the term variable. Okay, and at an instant there could be 2 variables, and usually it is composition and the other one is temperature. Okay, so here the number P plus F is equal to C plus 2. It's a established formula in case of Gibbs phase rule. Initial formula it is. Okay, so P is the number of phases in the system, F is the number of variables that can be changed independently without affecting number of phases, C is the number of elements or the number of components, and 2 it represents any 2 variables amongst temperature, pressure और composition. टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन में से कोई 2 वेरिएबल्स जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ फेज डायग्राम, usually what happens, we always consider pressure as a constant. Okay, so if you are considering pressure as a constant, so the Gibbs phase rule will modify as P plus F is equal to C plus 1. So that 2 is now replaced with the term 1, because 2 was connected with the 2 variable. One is the composition and the other one is another variable. So here what we have done, here we have fixed or studied the phase diagram at a constant pressure. So that's why we have reduced one particular term, and that 2 is now converted into the 1, and it is known as the
Gibbs phase rule. Okay, modified Gibbs phase rule. So whenever Gibbs phase rule is asked, so you have to tell about P plus F is equal to C plus 1. And why it is 1? Because we are going to freeze, we are going to study the phase diagram or equilibrium diagram at constant temperature. Okay. So these all the things you have already studied in your 10 plus 2 syllabus. So I'm skipping these two slides, nothing special. Okay, this is somehow Gibbs free energy related terms. So here I'm going to explain about the solubility or the solid solution and compound, because as you see the phase diagram, in phase diagram at one end copper is there, at one end and nickel is there, but at this particular position some copper percentage is there, around it is 60% of copper, okay, and 40% of nickel is there. So what kind of mixing is there? So here the mixing is a kind of solid solution. Okay, so it is important to know about the solid solution as well as the compound. Okay, so I'm showing you some pictorial representation that solid solution in the case of phase diagram could be substitutional solid solution or interstitial solid solution. Okay, these two kinds of solid solution we can have during the study of phase diagram, where in case of substitutional solid solution, either regular or ordered or random or disordered kind of arrangement we can see. Okay, so substitutional you can understand with the help of this particular picture which is shown on the right side, means some parent atom is replaced. Okay, so for example, as we are studying copper nickel today, so here is copper, here is nickel. If there is a particular regular arrangement of copper, if copper is replaced with nickel, if this is a copper atom and at this particular position copper is now replaced with the nickel, so this is known as the substitutional solid solution. Okay, and this kind of replacement, this kind of arrangement of the replacement will be formed in a particular order, in a particular fashion. Okay, so this will be ordered or fashioned substitutional solid solution. In case of random, same thing will happen, means a copper atom will shift just because of one nickel atom, but the shifting is not in regular manner. It will be a randomized shifting. Then it is known as random or disorder substitutional solid solution. Now, in case of interstitial solid solution, you can imagine, you can understand that one element will consider as a matrix. Okay, so in the case of iron and carbon, iron will behave just like a matrix. Okay, and within the matrix there are interstitial sites. At that particular interstitial site, carbon will come and sit. Okay, so matrix will behave somehow as a solvent, whereas carbon will behave just like a solute. So this is all about today's lecture, where we have studied the information extracted from this phase diagram, what kind of solid solution we have, and what are the different classification of the solid solution along with the interstitial or substitutional. Now the session is open for the question answer, please. Yes, now you can ask your queries. सर वो यूज ऑफ इक्विलिब्रियम वाले सर पेज पे से जो डायग्राम था वो पहले बता दीजिए सर. Yes, I think you are talking about this particular diagram. यस सर, यस सर. This diagram is basically very simple diagram of phase diagram or equilibrium diagram. Here actually what happens, we have two elements,
two components, one is copper and other one is the nickel, correct? And on y-axis there is a particular temperature. At this particular location, you can see weight percent nickel is increasing in this direction. At this particular position, nickel is 0%, copper is 100%. Okay. माइक ओपन करके रखें जिसको भी डाउट था. Okay, so at this particular position, copper is 100% and nickel is 0. And as you will move from left to right, nickel percentage will increase and will reach up to the 100% at the right side end. Yes, sir. And as you move from left to right, nickel percentage is increasing and copper percentage will reduce and will reach to 0% at the other right side end. तो यहाँ पर Yes, क्या sir. है, 0% कॉपर हो जाएगा और 100% आपका निकल हो जाएगा. बट एट सम इंस्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ पर तो कोई मिक्सचर मिलेगा ना हमको. यहाँ Yes, पर sir. अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर तो आपको कुछ एक मिक्सचर मिलेगा, एक कंपोजिशन मिलेगा. एंड एज पर दिस पर्टिकुलर एक्सिस वी कैन अंडरस्टैंड कि ये 0% निकल है, यहाँ पर 100% कॉपर है. सो एट दिस इंस्टेंट 30% निकल इज देयर, 70% कॉपर विल बी देयर. यहाँ पर जो भी फेज आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन में बनेगा अप टू दिस, ठीक है, वहां पर आपका 30% निकल और 70% कॉपर का कंपोजिशन होगा. ये क्लियर हो गई एक्स एक्सिस आपकी. अब हम बात करते हैं कि इसको वाई एक्सिस में कैसे रीड करते हैं. अगर इसी डायरेक्शन में हम ऊपर गए तो अब यहां तक जो आप देख रहे हो अप टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, यहां पर आप देखो ये पूरा जो है सॉलिड सॉल्यूशन फेज है विच इज टर्म्ड एज अल्फा फेज. मतलब यहां पर ये पूरा फेज जो है वो आपका सॉलिड फेज है. So at this particular position up to this level, you will have a solid solution. You will have a solid solution of nickel and copper. Correct? Okay. और थोड़ा सा ऊपर आप चलोगे, इस लाइन को आप पार करोगे. What is this line? This line is known as liquidus line. क्योंकि इस लाइन के नीचे सारा कुछ, sorry, this line is known as solidus line because just below to this line all phase is solid form. Solid phase, sir. ठीक है, all phase is solid phase. So this line is separating your solid phase from your solid plus liquid phase, so it is known as solidus line. तो solidus line से ऊपर आप जाओगे और ये आपकी liquidus line है. Liquidus line means above the liquidus line the whole phase will be in liquid form. तो यहाँ पर आपका लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है वो आपका लिक्विड रहेगा, कुछ पोर्शन आपका सॉलिड रहेगा. अगर आप इसी स्ट्रेट वे में आगे जा रहे हैं, कंपोजिशन आपका यही रहेगा. इसी स्ट्रेट वे में अगर आप इसी वर्टिकल लाइन के अलोंग चल रहे हैं, कंपोजिशन आपका यही रहेगा. बट एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज some liquid portion will be there and some solid phase will be there. But beyond this particular line, the whole phase will be the liquid phase. Okay, sir. Correct? अब मन में क्वेश्चन sir. ये आ रहा होगा, ये इस टाइप की शेप क्यों ले रहा है, सीधी लाइन क्यों नहीं ले रहा है. हाँ सर, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है सर, यही क्यों नहीं है. तो दोस्त ऐसा है कि ये प्योर कॉपर है, ये प्योर निकल है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिखा दिए हैं. यस सर. ठीक, जब कॉपर में निकल मिक्स होगा, मतलब एक लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल में एक हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल मिक्स होगा, सॉलिड सॉल्यूशन एस्टैब्लिश होगा, फिर उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो जो है हायर होगा एज कंपेयर टू द लोअर मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट.
and lower than the higher melting point element. तो ये Okay, sir. कंपोजिशन के बेस पे देखा गया है, तभी ये कर्व बनाया गया, अदरवाइज इसको लीनियर भी बनाया जा सकता था। क्योंकि अभी क्या है, अप टू दिस 50 लाइन at this particular point 50-50 is there. Yes, Okay, sir. up to this line 50% copper and 50% nickel is there, but beyond this line, beyond this point, nickel will be higher and copper will be less in amount, और जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा that will be termed as matrix solvent का काम करेगा ये, Yes, sir. और फिर दूसरा जो करेगा वो रेनफोर्स एलिमेंट या मिक्सिंग एलिमेंट की तरफ काम करेगा, जो सॉल्यूट कहलाएगा। Solute, अभी sir. कॉपर में निकल मिल रहा था, फिर क्या होगा, निकल में कॉपर मिक्स होगा, कॉपर मिलेगा सर। है ना। तो जो बिहेवियर रहते हैं मेल्टिंग के या उनका दोनों का मिक्स होने के बाद जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो समहाउ वेरी करता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर ये लिक्विड फेज है पूरा, यस सर। इसके नीचे पूरा सॉलिड फेज है, और दोनों के बीच में एक ऐसा जोन आता है जहां पर लिक्विड प्लस सॉलिड फेज। ये बहुत ही सिंपल फेज डायग्राम है कॉपर निकल का। आयरन कार्बन का जब हम पढ़ेंगे उसमें कई सारे फेजेस डेवलप होते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझना हमें डिटेल में जरूरी होगा, और उसको काफी समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए। एंड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहां पर भी जाओगे कॉपर आयरन कॉपर का ही फेज डायग्राम पूछा जाएगा और बात की जाएगी। सो आई थिंक डाउट इज क्लियर। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर यस विशाल। सर पिछले लेक्चर की और इस लेक्चर की सर पीपीटी अपलोड कर दीजिए सर। अपलोड करना है, व्हाट्सएप करना है? सर पोर्टल पे ही कर दीजिए सर अपलोड। ओके फाइन, मैं क्लास एंड होते ही करता हूँ। यस सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। सर इस डायग्राम, हेलो सर, इस डायग्राम में 1085 डिग्री सेल्सियस हमारा कॉपर जब प्योर था तो मेल्टिंग पॉइंट था उसका। करेक्ट सर तो मिक्स कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो सर इसके बियॉन्ड क्या होगा, मतलब कॉपर निकल का मिक्सिंग इसके पीछे और 1085 डिग्री सेल्सियस के नीचे? नहीं बेटा, दो ही सारे चीजें सॉलिड। हैं, दो ही चीजें हैं। एक है आपका प्योर कॉपर, दूसरे एंड पे है प्योर निकिल। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन तभी होगा ना जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। यस सर। ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं होगा ना कि कॉपर पीछे भाग रहा हो और निकिल उसका पीछा कर रहा हो। नहीं सर। ठीक है, तो कॉपर अगर 100% है तो Yes, निकिल 0 है, और 110% कॉपर तो नहीं कर सकते हम लोग कि उसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, नहीं नहीं, नो सर। और -10 निकिल नहीं किया जा सकता। यस सर। शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? तो सर एक डाउट और है सर, ये हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में जब हम निकल अल्युमिनियम का सॉलिड सॉल्यूशन भी लो, अच्छा ये निकल अल्युमिनियम है सर, ओके सर। 400 डिग्री से नीचे था इसीलिए। हाँ, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? वो सर निकल अल्युमिनियम का था सर, सॉलिड सब्स्टिट्यूशन वाले में वही हम देख रहे थे। Okay, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। नहीं देखो, दोनों जो एंड होंगे, दोनों जो वाई एक्सिस होंगी, ठीक है, वहां पर जो पहला डॉट आएगा, द फर्स्ट डॉट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ प्योर कंसर्न एलिमेंट, यस सर। है ना। और यूजुअली बहुत केस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें एक एलिमेंट लोअर मेल्टिंग पॉइंट का होगा एंड द सेकंड वन एलिमेंट इज समहाउ अपर मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट। यस सर। तो लोअर में जब अपर मिलाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो लोअर वाले का मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे अपर वाला उसमें मिक्स होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। यस सर। दूर मत जाएं, वाटर को बॉईल करने में
कितना समय लगता होगा जब वाटर आपका प्योर है, मतलब नथिंग इज मिक्स्ड, ठीक। बट वाटर में धीरे धीरे शुगर मिलाना आप शुरू कर दो तो सर उसका बढ़ जाएगा और तो सैचुरेशन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, करेगा। ठीक है। यस अगर सर। यहाँ पर कॉपर की जगह अगर आप वाटर कर दो और निकल की जगह आप शुगर कर दो, व्हाट विल हैपन? बढ़ जाएगा सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अगर ये यहाँ जी। पर एट दिस लोकेशन इफ इट इज ए प्योर वाटर तो ये देन इसी 100 डिग्री लोअर सेल्सियस टेम्परेचर पे हो जाएगा। हियर इट इज अ शुगर। और यहाँ पर अगर आप कोई एक पूछूं मैं आपसे, यहाँ का लिक्विड फेज किस टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बी टेम्परेचर फॉर द शुगर मेल्टिंग, दिस इज द ए टेम्परेचर फॉर वाटर। वाटर मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स यहाँ पर हम वेपर की बात करेंगे, वाटर तो Yes. ऑलरेडी मेल्टेड है ही, यस यस। ठीक है। लिक्विड टू वेपर। तो इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें क्या, हमारा यहाँ पे रोल आ जाएगा, शुगर के बीच में वाटर मिक्स होगा। अभी क्या है, वाटर के बीच में शुगर मिक्स है, शुगर मिक्स है। ओके। तो ये डिफरेंस आ जाता है जैसे ही 50 के पहले रहते हो और 50 के बाद हो जाते हो। यस सर। तो जो पहले मैट्रिक्स होता था वो बाद में मैट्रिक्स नहीं रहता है, वो बाद में सॉल्यूट हो जाता है। जो पहला अपने में समा रहा था जिसको, वो खुद फिर होने लगता है। एकोमोडेट जिसको किसी चीज को कर रहा था, वो अब दूसरे के एकोमोडेशन में आ जाएगा, ठीक है। और दोनों के एकोमोडेशन का बड़ा अंतर है। हम किसी को अपने गोद में लिटाएं, हमारा तरीका अलग होगा, और हम किसी की गोद में लेटेंगे तो उसका तरीका अलग अलग होगा। होगा। करेक्ट। यस सर। ओके, एनी अदर थिंग नो। from other students? Okay, so I'm stopping this class at this particular position. Okay, we'll start from the next point in the next lecture. Or still you have any problem, you can ask me anytime. I will share this particular all PPT, 2 PPTs and concerned video lectures on the portal. Okay, thank you. थैंक यू सर।